अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 19 है, लास्ट चैप्टर है इंग्लिश ग्रेड 12 का, उसके आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि 22 क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस के अंदर कैरेक्टर स्केचेस भी हैं, तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और इसको तसल्ली से देखना है क्योंकि इसमें से आपका 8 नंबर का जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसमें से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दैट हाउ डिड द बॉयज़ come to the jungle island. The boys are from military school Britain. The time seems like World War II. They are being evacuated somewhere by a plane. Their plane crashes, but they survive and happen to come to the island. Question number 2 is that what did Ralph do to attract the other boys on the island? Ralph attracted the other boys on the island by blowing into the conch that he and Piggy found, which produced a loud sound that could be heard from miles. Then he made a strong impression by telling them that his father was a commander in Royal Navy and he would come to rescue them. Question number 3 is that describe the scene of arrival of Jack and his band at the place where the boys were assembled. When the choir first appears, they are in formation. वो एक लाइनों के अंदर एक परेड की शक्ल में आ रहे हैं. Jack is the drill sergeant. He does not allow them to fall out. When one of the choir members actually does seem to almost faint, then and only then does Jack give them permission to stand at ease. Acha, question number 4 is that what was the first issue that arose before the boys and how was it tackled? The first issue that arises is that the boys need to choose a chief to lead them. Both Jack and Ralph want to lead, so the conflict is solved by voting. Ralph wins the votes, so he becomes a leader, but he allows Jack to lead the hunters. Question number 5 is that how did Ralph think they would be rescued? Ralph declares that they must light a signal fire to attract the attention of passing ships. Ralph suggests a signal fire which the boys light on the top of the mountain. The intention is to add green branches to produce smoke to attract the attention of any ship or plane which they might see and come to rescue them. ठीक है. Question number 6 is that what rule regarding the conch was made and why? So conch was given the status of mouthpiece. The role of the conch was that it was given to whoever was speaking and nobody was allowed to interrupt the speaker. ठीक है. Question number 7 is that briefly describe the role of hallucinations seen from Lord of the Flies. So after seeing the hunters kill the sow and display its head on a stick, Simon has a hallucination in which the pigs had seems to talk to and threaten him. Then he faints or has a seizure. Simon is not interested in hunting but stays hidden while the others kill the sow. Sow matlab pig. He feels solace in solitude and staying away from all kind of activities. Question number 8 is that what is the significance of the title of Lord of the Flies? कि जो इसका टाइटल है उसका क्या मतलब है? अच्छा, उसका क्या, उसकी क्या सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस है? लॉर्ड इज़ अ वर्ड ऑफ पावर एंड फ्लाइज कॉनॉट डेथ एंड डिके. ठीक है, कि वो मतलब तबाही को और बर्बादी को सिम्बलाइज करती हैं फ्लाइज. सो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज़ अ पावर ऑफ करप्शन, decay and death. Lord of the Flies is also the popular translation of Beelzebub, who is either a demon or the who is either a demon or the devil himself. Beelzebub डॉक्टर फॉस्टस एक मशहूर ड्रामा है इसका क्रिस्टोफर मार्लो का लिखा हुआ, उसका एक कैरेक्टर भी है बेल्जेबब जिसको शैतान का सबसे बड़ा चेला भी कहा जाता है. साइमन कॉल्स द severed pigs had Lord of the Flies because he sees it as a manifestation of the boy's nature and possibly his own as well. Question number 9 is that what happens to the conch and Piggy and what does it suggest? Piggy carries the conch with pride as he, Ralph, Sam and Eric go to confront Jack's tribe about his stolen glasses. In the middle of argument and fight between Jack and Ralph, Roger releases the giant rock which kills Piggy and destroys the conch. The destruction of both Piggy and conch represents the final loss of order on the island. ठीक है. Question number 10 is that how are the boys rescued at the end? The boys are rescued in the final chapter of the novel when a British battleship anchors off the shore of the tropical island after witnessing the entire island on fire, which was caused by Jack and his savages while they were hunting Ralph. ठीक है. Question number 11 is that how were Ralph's priorities different from Jack? The main difference between Jack and Ralph's leadership stems from the boys' motivation. Ralph wants to be a true leader and execute the job to his best ability, doing whatever is best for all the boys. Jack is
merely power hungry and seeks to be chief merely to gain adulation, ठीक है, कि वो बस सिर्फ पाक उसको ताकत चाहिए. Throughout the chapter, Ralph and Jack's opposite priorities are depicted. Ralph is concerned with the shelters and signal fire, which are essential for survival and rescue, while Jack is only concerned about hunting. ठीक है. Question number 12 is that what does Simon represent in the novel? Simon represents saintliness यानी दरवेशी and a kind of innate अंदरूनी spiritual human goodness that is deeply connected with nature and in its own way as primal as Jack's evil instinct. कि जैक के अंदर जो बती का एलिमेंट है उसका ऑपोजिट है, उसका प्राइमल है ये. ठीक है. He does not take sides among the boys and he tries to think things out, preferring to go off by himself to do his thinking. He does not succumb to the evil on the island like the others do. कि वो उस बुराइयों में मुब्तला नहीं होता. वो दरवेश किस्म का एक कैरेक्टर है. Compare and contrast the characters of Ralph and Piggy. Ralph is tall, slim and athletic. He is good looking and described as being a fair boy. In contrast, Piggy is shorter than Ralph and visibly overweight. Piggy also suffers from asthma and has to wear glasses. In addition, Ralph is confident and more reserved than Piggy. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 इज़ दैट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉक हंट इन द नावल. कि वो जो बच्चे शिकार करते रहते हैं तो इस तरह के सीन्स नावल में डालने का क्या मकसद है. मॉक हंट मीन्स हंटिंग इन द फॉर्म ऑफ अ गेम और फन. द मॉक हंट्स आर सिम्बलाइज्ड एज प्रिमिटिव बिहेवियर. प्रिमिटिव बहुत पुराना कदीम. प्रिमिटिव बिहेवियर एंड बारबेरियनिज्म. अच्छा, वैश्याना जो रवैया था. द सक्सेसिव लगातार द सक्सेसिव मॉक हंट्स शो द बॉयज़ ग्रेजुअल एलियनेशन फ्रॉम एंड मूविंग फार्दर एंड फार्दर फ्राम सिविलाइज्ड बिहेवियर. कि जैसे जैसे वो शिकार में आगे बढ़ते जाते हैं वो एक महज़ब जो उनका रवैया है उससे दूर होते जाते हैं. एंड गोइंग बैकवर्ड टू बारबरिज्म. ठीक है. और वो जो एक वैश्याना या जो जंगलीपन था उसकी तरफ वो उसके करीब होते जाते हैं. इनफैक्ट गोल्डिंग्स पर्पस बिहाइंड द मॉक हंट्स इज़ टू डिस्प्ले द डीजनरेशन ऑफ द ह्यूमन हार्ट अंडर फेवरेबल सर्कमस्टांसेस. यानी विलियम गोल्डिंग जो है वो इसके ज़रिए ये बताना चाहता है कि अगर इंसान को मौका मिले तो इंसान बड़ी आसानी के साथ क्या होता है अपनी इंसानियत का जो लिबादा है वो उतार फेंकता है. क्वेश्चन नंबर 15 एक एक्सट्रैक्ट है. लिसन ऑल ऑफ यू, we are living along the beach by a flat rock. We hunt and feast and have fun. If you want to join my tribe, come and see us. Perhaps I will let you join, perhaps not. तो ये एक कोटेशन है. तो इसके हवाले से आपसे पूछा गया कि whose words are these and what is the occasion. कि ये अल्फाज किसके हैं और मौका कौन सा है. When Jack parts away from Ralph's crew and creates his own tribe, he starts hunting, but his tribe needs fire to cook the meat. In chapter number 8, Jack invades Ralph's tribe to steal fire. When they have taken some half-burnt branches, Jack speaks these lines to the boys in Ralph's tribe to lure them to join his tribe. यानी वो जब आग चोरी करने के लिए आते हैं चैप्टर नंबर 8 में तो लड़के आग लेके चले जाते हैं और जैक जो है वो मतलब ना खड़ा रहता है वहाँ पे कि जितनी देर में लड़के वो आग चुरा के नहीं चले जाते वो वहाँ पे खड़ा रहता है. जब वो आग लेके चले जाते हैं तो उसके बाद वो जो राल्फ के कबीले के लड़के होते हैं उनको ये बात करता है और फिर वो भी चला जाता है. क्वेश्चन नंबर 16 इज़ दैट ये फिर अगेन एक कोटेशन है. अथॉरिटी सेट ऑन हिज शोल्डर एंड चैटर्ड इन एयर लाइक एन एप. ये स्टेटमेंट जो है इसको आप एक्सप्लेन करना है, ये आपसे क्वेश्चन है. अब ये जब राल्फ जो जैक है जब वो चीफ बन के बैठा होता है और एक तरह से कह लें कि राल्फ का डिक्लाइन चल रहा होता है तो उस दौरान उसका एक मंजर कशी करते हुए विलियम गोल्डिंग ने ये लाइंस यूज़ की हैं. तो आपने इनको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो है वो इनको एक्सप्लेन करना है. जैक हैड अ रेबिलियस and cruel nature. He continuously raged and broke the democratic procedures of the assembly. The way to get things done, he believed, was to compel, not ask, to terrorize, not persuade. तो ये जैक का रवैया था. वो कहता था कि बातें कहने से नहीं होती बल्कि लोगों को मजबूर करने से होती हैं और लोगों को रजामंद करने से काम नहीं होते बल्कि लोगों को डराने से काम होते हैं. ये जैक का रवैया था. At last, आखिरकार जैक became the real dictator who enjoyed the worship of his hunters and ruled them by terror. After he successfully controlled the island, he was the undisputed lord of the feast, where he sat upon his long throne, painted and garlanded, sat there like an idol. कि वो एक खुदा बन के वहाँ पे बैठा हुआ था. There were piles of meat on green leaves near him and fruit and coconut shells full of drink, and power lay in the brown swell of his forearms. Authority sat on his shoulder and chattered in his ear like an ape.
तो इसलिए जो है ना वो इस मंजर कशी को जो राइटर है उसने इस अंदाज में बयान किया है। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ दैट द फायर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विदाउट द फायर वी कैन नॉट बी रेस्क्यूड। ये अल्फाज किसके हैं और व्हाट डू यू से अबाउट दिस स्टेटमेंट, तो आपका इस स्टेटमेंट के बारे में क्या ख्याल है। These words are spoken by Ralph when he was addressing the assembly. This shows how Ralph acknowledges his mistakes and knows his boundaries. He knows the difference between right and wrong. He understands, he knows what needs to be done. Question number 18 is that what is the dominant theme of the novel? The central concern of Lord of the Flies is the conflict between two competing impulses that exist within all human beings. The instinct to live by rules, act peacefully, follow moral commands, and value the good of the group against the instinct to gratify one's immediate desires, act violently to obtain supremacy। कि इंसान के अंदर ना खैर और शर का जो फ़लसफ़ा है ना कि इंसान के अंदर खैर भी है शर भी है, तो उसको दर हकीकत इस नावल के ज़रिए क्या किया गया है, बताया गया है। दिस नावल ड्राज अ लाइन बिटवीन सैवेजरीज वर्सेस सिविलाइजेशन। Ralph represents civilization as he wants to enforce rules and let everyone have an equal say. Question number 19 is that what general idea about the psychology of the small children do you derive from this novel? कि छोटे बच्चों की जो नफ्सियात होती है उसके हवाले से आपको इस नावल से क्या सबक मिलता है। Psychologically, this novel tells that humans have both type of personalities by nature. They are cruel, kind, compassionate, civilized and uncivilized by default. कि इंसान अपनी फितरत के एतबार से अच्छा भी होता है और फितरत के एतबार से बुरा भी होता है। Every child was trying to achieve his end by his way and they didn't care about anything else। कि हर बच्चा बस अपनी जो उसके जहन में चीज़ थी बस वो उसी को अचीव करना चाहता था। This novel tells about the natural differences and two competing impulses that exist within all human beings। क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसके अंदर क्या है, कुछ सिम्बल्स हैं, आपने उनको एक्सप्लेन करना है। तो पहला जो सिंबल है दैट इज़ द कॉन्च शेल। अ कॉन्च इज़ अ टाइप ऑफ मोलस्क विद अ पिंक एंड वाइट शेल इन द शेप ऑफ अ स्पाइरल। वंस द एनिमल इनसाइड डाइज द शेल कैन बी यूज एज अ ट्रम्पेट, यानी कि बगल के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है बाय ब्लोइंग इन टू वन एंड। इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज द बॉयज यूज अ कॉन्च टू कॉल मीटिंग्स एंड ऑल्सो टू डेजिग्नेट हु इज स्पीकिंग। इन दिस वे द कॉन्च सिम्बलाइजेज डेमोक्रेसी एंड फ्री स्पीच। Anyone who is holding the conch can speak his mind and everyone else must listen and wait their turn for the conch. However, the fact that the conch is easily broken, signaling the end of civil communication, symbolizes the fragility of democracy, which needs protection by all participants in order to survive। ठीक है, तो ये बड़े बड़े मज़े के इसमें सिंबल्स हैं। पिगीज ग्लासेस, तो पिगी के जो ग्लासेस हैं उनका क्या सिंबलिज्म है। पिगीज ग्लासेस आर इम्पॉर्टेंट, okay, because they enable Ralph's group to light a signal fire that can help them get rescued. The glasses are later used by Jack's group to light fires for having pig roasts. Ultimately, the glasses represent the power of fire to bring comfort and keep the boys linked to civilization, as well as the power to cause death and destruction, such as when the fire gets out of control and kills a little. Acha, when Jack breaks and later steals Piggy's glasses, these occurrences demonstrate how far the boys have fallen into savagery। यानी ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके फ़ायदे भी हैं जिसके नुकसान भी हैं। अच्छा, उसके बाद सिग्नल फायर का क्या इसमें सिंबलिज्म है। इन द फर्स्ट मीटिंग विद ऑल द बॉयज दैट राल्फ ऑर्गेनाइजेस, he takes on the role of leader and makes sensible suggestion such as this one about a signal fire, about how they can get rescued। The signal fire here represents the boys communication with the outside world, कि उस फायर के ज़रिए ही वो आउटर वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। The word of grown-ups and rules, the word that can save them from themselves। However, while the signal fire symbolizes a connection to civilization at the beginning of the story, towards the end its meaning changes and the fire that could once save the boys turns into a destructive and deadly force। कि फिर वो उसी आग की वजह से उनकी फिर क्या होती हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं। बीस्ट का इसमें क्या सिंबलिज्म है। एट फर्स्ट द बीस्ट इज़ व्हाट द लिटिल वंस कॉल द स्केरी थिंग इन द नाइट एंड इट सून रिप्रेजेंट्स द अननोन एंड द बॉयज फियर। कि वो सिर्फ एक बीस्ट जो है वो फिर लड़कों का एक खौफ बन जाता है। साइमन डिस्कवर्स दैट बीस्ट इज इनफैक्ट अ डेड पायलट हु रीडर्स लर्न फेल टू द आइलैंड ड्यूरिंग द नाइट। अच्छा, देयर वाज अ स्पेक अबव द आइलैंड, ये पूरी लाइन जो है वो उसमें से जिसमें वो बताया गया है। अ फिगर ड्रॉपिंग स्विफ्टली बीनीथ अ पैराशूट, अ फिगर दैट हंग विद डैंगलिंग लिम्स। अच्छा, belief in the beast is fueled by Sam and Eric, who hear the opening and closing of the parachute, and by Jack, Ralph and Roger, who encounter the decayed body of the pilot without recognizing that it is a dead human body, not a beast। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में कैरेक्टर्स हैं। पहला राल्फ का कैरेक्टर है।
the novel's protagonist यानी hero, the 12 years old English boy who is elected leader of the group of the boys marooned on the island, जिनको बेयारो मददगार जिन बच्चों को आइलैंड पे छोड़ दिया गया है. अच्छा, राल्फ अटेम्प्ट्स टू कोऑर्डिनेट द बॉयज एफर्ट टू बिल्ड अ मिनिएचर सिविलाइजेशन. मिनिएचर एक छोटी सी तहजीब को बनाने की कोशिश करता है ऑन द आइलैंड until they can be rescued. Ralph represents human beings' civilizing instinct as opposed to the savage instincts that Jack embodies. Ralph is one of the oldest boys and is quickly elected as chief. He is generally fair-minded and decisive. कि वो फैसला करने की उसमें सलाहियत है. He listens to the others but takes control when necessary. Ralph thinks it is important to have rules and to be organized. He has a great sense of fair play and defends others who are weaker than himself. As the novel progresses, Ralph begins to think increasingly about the civilized world that has been left behind. Ralph quickly realizes that the two things that the boys will need are shelter and a signal to attract attention, and he sees that these are achieved. अच्छा, he organizes a subgroup to hunt for food and holds assemblies. तो बड़ा एक मैच्योर किस्म का कैरेक्टर है. उसके बाद दूसरे नंबर पे जैक है, द स्ट्रॉन्ग विल्ड. अच्छा, ईगो मैनिएकल. Jack is the novel's primary representative of the instinct of savagery, violence and the desire for power. In short, the antithesis of Ralph. कि वो Ralph का क्या है, opposite है, यानी कि वो villain है. मतलब उस तरीके से हम विलन नहीं कह सकते, लेकिन वो राल्फ का क्या है, उल्टा है. क्योंकि विलन और जो हीरो का कॉन्सेप्ट है ना, ये क्लासिकल नॉवेल्स के अंदर था. जो मॉडर्न नॉवेल्स होते हैं उसके अंदर हीरो और विलन का उस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं है जिस तरीके का क्लासिकल राइटिंग्स में होता था. फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल, जैक डिजायर्स पावर अबव ऑल अदर थिंग्स. He is furious when he loses the election to Ralph and continually pushes the boundaries of his subordinate rule in the group. Early on, Jack retains the sense of moral propriety and behavior that society instilled in him. In fact, in school, he was the leader of the choir boys. The first time he encounters a pig, he is unable to kill it, but Jack soon becomes obsessed with hunting and devotes himself to the task, painting his face like a barbarian and giving himself over to bloodlust. The more savage Jack becomes, the more he is able to control the rest of the boys. Indeed, apart from Ralph, Simon, and Piggy, the group largely follows Jack in casting off moral restraint and embracing violence and savagery. Jack's love of authority and violence are intimately connected, as both enable him to feel powerful and exalted. By the end of the novel, Jack has learned to use the boys' fear of the beast to control their behavior, a reminder of how religion and superstition can be manipulated as instruments of power. उसके बाद पिगी का कैरेक्टर है. पिगी is the first boy Ralph encounters on the island after the crash and remains the most true and loyal friend throughout the Lord of the Flies. An overweight, intellectual and talkative boy, Piggy is the brains behind many of Ralph's successful ideas and innovations, such as using the conch to call meetings and building shelters for the group. Piggy represents the scientific and rational side of humanity, supporting Ralph's signal fires and helping to problem solve, on the island. However, Piggy's asthma, weight, and poor eyesight make him physically inferior to the other boys, making him vulnerable to scorn and ostracism. Piggy is also the only boy who worries about the rules of English civilization, namely what the grown-up will think when they find the savage boys. Piggy believes in rules, timeliness, and order, and as the island descends into brutal chaos, Piggy's position comes under threat of intense violence. तो मतलब वो जो हम अक्सर कहते हैं ना कि जी जो शरीफ लोगों के साथ बुरा ही होता है, तो ये सारा कुछ हम देख सकते हैं कि पिगी के साथ हुआ है. Simon, whereas Ralph and Jack stand at opposite sides of the spectrum between civilization and savagery, Simon stands on an entirely different plane from all other boys. कि जहाँ पे जैक और राल्फ के दरमियान टसल चल रही है, साइमन जो है इस सारी टसल से आज़ाद एक अलग दुनिया में खड़ा हुआ है. साइमन embodies a kind of innate spiritual human goodness that is deeply connected with nature and in its own way up as primal as Jack's evil. The other boys abandon moral behavior as soon as civilization is no longer there to impose it upon them. They are not innately moral. Rather, the adult world, the threat of punishment for misdeeds,
हैज़ कंडीशन दैम टू एक्ट मॉरली, कि बाकी जो बच्चे हैं उनके बिहेवियर से हमें ये पता चलता है कि वो ज़ाती तौर पर अच्छे नहीं थे, बल्कि वो इसलिए अच्छे थे क्योंकि ज़माना जो है वो आपको अच्छा बना के रखने पर मजबूर करता है, वरना वो ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि उनको जिनको मौका मिले तो वो वहशियाना पन पर उतर आएंगे. टू एन एक्सटेंट even the seemingly civilized Ralph and Piggy are products of social conditioning, as we see when the when they participate in the haunt dance. ठीक है, तो मतलब ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स किस्म का और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का नावल है. क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ राल्फ एंड जैक. Ralph is protective towards the little ones on the island, while Jack ignores them completely. He captures Sam Narek, the twins, and tortures them to disclose Ralph's hideout in the forest. While Ralph seeks to dispel their fears of the beastie or the snake thing, he builds shelter for their protection. While Jack and his hunters destroy them, steal Piggy's spectacles. Ralph is introspective, while Jack is a born hunter. इंट्रोस्पेक्टिव सोच विचार रखने वाला. द रिफ्ट या जो उनके दरमियान तजाद है, कॉन्फ्लिक्ट है, द रिफ्ट बिटवीन राल्फ एंड जैक लीड्स टू डिजास्ट्रस consequences because the evil in Jack proves to be much stronger than the good in Ralph. In certain aspects, Ralph and Jack are alike as leaders because they both want to lead in their own way. However, their aims are different. Jack wants to hunt and Ralph wants to be rescued. Jack is the autocratic, less caring leader, whereas Ralph is autocratic कि जो अपनी मर्जी चलाने वाला हो. Ralph is democratic and tries his level best to do good for the boys in the island. Symbolically, Ralph represents order, leadership, and civilization, whereas Jack represents unbridled savagery and desire for power. Ralph represents the boys of character and sensitivity. अच्छा, he tries to face in an adult way a situation quite beyond his control, कि जो सूरत हाल उसकी कंट्रोल से बाहर होती है उसमें भी वो बड़ा मैच्योर तरीके से बिहेव करता है. He has integrity, compassion, courage, authority and a strong awareness of the values of civilization. He strives for what is good and right against what is wrong and evil. He fails, and in his failure we see mankind's failure to deal with the forces of evil. However, with his rescue we feel that good will eventually be rescued from the clutches of evil. William Golding may be pessimistic about the nature of man, but like Hardy he is not pessimistic about the governance of this universe. तो ये जो लास्ट लाइन है इसको अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे टॉमस हार्डी के साथ विलियम गोल्डिंग के स्टाइल को क्या किया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर किया गया है. तो आज हमारी बुक जो है वो फाइनली क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर के एतबार से ख़त्म हो चुकी है. इसके बाद समरीज़ हैं, समरीज़ भी मैं ऑलरेडी चैनल के ऊपर डाल चुका हूँ, और उसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट और फाइनल जो राउंड होगा उसमें हम करेंगे MCQs. चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट को लाजमी विज़िट कीजिएगा, क्योंकि आपको सारी चीज़ें प्लेलिस्ट के अंदर जो हैं वो बड़ी तरतीब के साथ आपको वहाँ पे मिलेंगी. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. खुदा हाफिज़.